In this video, I am going to show you how you can draw this shelf design in isometric AutoCAD. So first you have to convert your AutoCAD file into isometric. So you have to click here. Here we have one option, that's isometric drafting. So click here. Now you can see I don't want this grid. So just click here. Just turn off the grid and shortcut key is F7. Before started the drawing, we have to set the units. So UNITS, enter, and then select decimal and here 0.0 and I want centimeters. So click here. It's inches to centimeter. Click here and then OK. So first take a line because we have to draw this face. You can see here it's a 22 centimeter by 22 centimeter. We have to start from the bottom. Take a line, but see, you can see isometric view always we have to draw on 30-60 degree. So I'm not getting any reference angle. So what we have to do, just turn on this polar. Click here and you can see here we have arrow. Click on the arrow and then here we have options 30, 60 and 90. Just select this 30, 60 and 90 degree angles. Now take a line L, enter. Now you can see we are getting a reference line. On 30 degree we have to draw 22 centimeter. 22 and then enter. Again we have to draw on 150 angle 22 centimeter. Again 22 centimeter and then close this square. Done. Now we need a height. I'm using a 1.75. Take a line L, enter, and then 1.75. Again take a line 1.75. L, enter, 1.75, enter, line, enter, 1.75, again enter. Again take a line, हमें इसको close करना है and then close this portion. Now you can see this part is done. This is not a proper isometric but we have to draw properly. ठीक है, this one is done. You can see ये नीचे है, so we don't need, जो भी नीचे होती है या तो वो dotted में show होती है line या फिर proper erase होती है. So I don't need. ठीक है, बाद में हम इसको one by one erase कर देंगे. First we have to draw. Now we need this. You can see end to starting. We need a 26 centimeter. Take a line L, enter, 26, enter. What you have to do? You can draw, otherwise you can copy. Let me show you again. Select CO, enter, first point and then second point. We need 2 more levels. ठीक है, again mark line from here 26. Again select, I don't need this, select and then CO, enter, end point and then paste here. ठीक है, 3 level हो गए, first, second and third. We need a last one. Again take a line L, enter and then 26, select CO, enter, end point and then first point. Now you can see अपने ये level तो बन गए. Now we have to draw this design. You can see it's end point and then midpoint, midpoint and then end point. First we have to erase these lines because we don't need. Take a line L, enter, end point and then midpoint, midpoint and then end point. ठीक है, इसकी thickness है 1.75. Again L, enter, 1.75. Now just copy this one M, CO, enter, click here to N, जहाँ पे भी अपना 1.75 आ रहा था यहाँ. This part is done.
यू कैन सी हमें सिर्फ ये 2 लाइन्स ही दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ से ये लाइन नहीं शो होगी, सो वी हैव टू ट्रिम दिस लाइन, TR डबल एंटर एंड देन क्लिक हियर। सेम ये चीज़ भी शो नहीं होगी, TR डबल एंटर एंड देन ट्रिम, ठीक है। ये लाइन हमें शो नहीं होगी, डिलीट, सिलेक्ट एंड देन डिलीट, सिलेक्ट एंड देन डिलीट। नाउ यू कैन सी इट्स परफेक्टली, ठीक है। अब यहाँ से जो डिज़ाइन है सेम वी हैव टू डू बट ऑन ऑपोजिट साइड। टेक लाइन L, एंटर, एंड पॉइंट एंड देन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट, ठीक है। अगेन वी नीड अ 1.7, यहाँ से यहाँ नॉर्मल रेफरेंस लेंगे हम इधर, 1.75 एंटर, सिलेक्ट, ठीक है। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, CO एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट, यू कैन से ये आ गया। यहाँ से हम लगाएंगे लाइन, टेक अ लाइन, L एंटर, क्लिक हियर एंड देन दिस वन, दिस पोर्शन, ठीक है। नाउ ट्रिम एक्स्ट्रा लाइंस जो हमें नहीं चाहिए, TR डबल एंटर एंड देन ट्रिम। ये पोर्शन भी हमें नहीं शो होगा, ट्रिम, और ये लाइन है नॉर्मली इरेज इट, E एंटर एंड देन सिलेक्ट लाइन, E एंटर एंड देन इरेज इट। नाउ यू कैन सी दिस पार्ट इज डन। अब जो ये है, ठीक है, हेयर वी हैव टू ड्रॉ ऑन फ्रंट, इस साइड से टेक अ लाइन, एंड पॉइंट एंड देन मिड पॉइंट, L एंटर, मिड पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। इस साइड को कितना चाहिए, 1.75, अगेन 1.75, select this line, CO enter, first point and then second point, ठीक है। ट्रिम, ये लाइन हमें चाहिए ही नहीं, इरेज इट, E एंटर, सिलेक्ट एंड देन E एंटर, TR डबल एंटर, ट्रिम के लिए, ट्रिम दिस लाइन्स, ठीक है। इस केस में ये भी लाइन ट्रिम हो जाएगी। ये तो हो गया। अब हमें इस साइड से बनाना है, दिस वन, L एंटर, एंड पॉइंट एंड देन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। इसका फिर से 1.75, L एंटर, सॉरी L एंटर एंड देन 1.75. Now select and then CO, enter, sorry CO enter, select the line अगर पहले नहीं select हुई थी, first point and then second point, ठीक है। इसको करेंगे line again, close it क्योंकि हमें ये पोर्शन दिखेगा, and then trim this line, TR double enter, अगर यहाँ पे line है first we have to erase it and then TR double enter and then trim these lines, और ये लाइन हमें दिखेगी ही नहीं, TR double enter and then trim this line, ठीक है। अभी हमारे पास क्या रह गया, ऊपर वाला पोर्शन, दिस वन। और ये कैसे है, सेम जो हमने नीचे बनाया था, वी कैन सिलेक्ट एंड कॉपी, CO एंटर, एंड पॉइंट, और इसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, एंड पॉइंट पे ही, ठीक है। एंड देन ट्रिम एक्स्ट्रा लाइंस जो भी हमें नहीं शो होगी, TR डबल एंटर एंड ट्रिम एक्स्ट्रा लाइंस, डन। और ये भी लाइन हमें शो नहीं होगी, इसको हम कर देंगे इरेज। नाउ यू कैन सी इट्स डन। और डायमेंशन के लिए नॉर्मली यूज अ शॉर्टकट की, DIM ALI, DIM ALI एंटर,
first point and then second point. Drag your mouse. But you can see it's coming like a 22.0000 और इसका dimension भी properly text की height नहीं आ रही है. So what we have to do, we have to set the dimension setting. D, enter, and then you get the dimension style manager window. Click on the modify and click on first primary. If you are using architecture, here I am using a decimal, then just select a decimal 0.0. Go to the text and change the text height. Here I am using 2. Here I am using 2. And then change the arrow. If you want, here I am using a oblique and arrow size I am using a 1. Click OK. Set current and close. Now you can see it's a 22.0. Again now DIMALI, enter, first point and then second point, drag your mouse. Again DIMALI, first click and then second click, drag your mouse. ठीक है, टोटल हाइट के लिए हम करेंगे फर्स्ट टू लास्ट एंड देन ड्रैग योर माउस. अब इसको अलाइन करना है. व्हाट वी हैव टू डू, DIMEDIT, dim edit, enter. Here we have a 4 option. You can see home, new, rotate, oblique. Click on oblique and then select your dimension, enter, first point and then second point, because मुझे इस लाइन के along इसको अलाइन करना था. What I did, DIMEDIT, enter, oblique, select your dimension, enter, first point and then second point. Same we have to do with this. Dim edit, oblique, select your dimension, first point and then second point. First point and then second point. Now set, normally select and then drag. Select and then drag, so that कि ये properly आ जाए. That's why I'm just dragging. Now you can see. Hope so you like this video.